Carbohydrates, if we can talk about the basic definition of carbohydrate, we can say the polyhydroxy alcohol or polyhydroxy ketones. They are carbohydrates. Okay, carbohydrates are the polyhydroxy alcohol, and polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy ketones. Okay, polyhydroxy aldehyde, right? So basically carbohydrates have aldehyde or ketone group. So we can classify carbohydrates on the basis of functional group. Okay. And as you all know about it, that carbohydrates are the most abundant organic constituents of plants. Basically, what they do in our body, they are the major source of chemical energy. Okay. They Okay, so basically carbohydrates are the main reservoir of energy inside the body, and especially sugars and starch. We use sugar and starch as an energy source. Okay. Uh, I already explained you about the definition, but it is you can see once again it is the polyhydroxyaldehyde and ketones or substance that are hydrolyzed to yield these polyhydroxyaldehyde and ketones. We will see it, this in later part of our slide, why they are called as polyhydroxyaldehyde or ketones. Okay, simple carbohydrates are known as sugars or saccharides. Saccharides come from a Latin name known as saccharum, that means sugar. Okay, and the ending of the names of most of the sugar is O's. For example, glucose. Okay, we used a suffix O's. Okay, suffix is the term which we used at the end of a substance like glucose, fructose, and sucrose and maltose. Glucose is a principal sugar in the blood. You all know about it. Fructose, basically, it is the principal sugar in fruits and honey. And sucrose, basically, the common table sugar is sucrose. Okay. Maltose generally present in the malt. Malt extract. Have you heard about the that alcohol fermentation? Yes, ma'am. There people use malt extract to ferment the to get okay. We'll see. Okay, whose mic is on? Because people will not listen properly if background noise is much. Okay. Okay. So if we want to classify the carbohydrates, we can simply classify carbohydrates as a simple carbohydrate or complex carbohydrate. Simple carbohydrates generally consist of two, they can be subdivided into two further classes, monosaccharides or disaccharides. Mono means one, single unit. Single unit saccharides or carbohydrate moiety is known as monosaccharides. Okay, or we can say that the carbohydrate which upon hydrolysis gives nothing. Okay, because they are only single unit, or they can be also subclassified as a disaccharides. Okay, disaccharides which consist of a two units. Okay, upon hydrolysis these disaccharides will yield basically two monosaccharide unit. Okay, Monosaccharide units. or we can say that when two monosaccharides
fuses with each other through glycosidic bonds, they forms disaccharide. We will see this in later slides too. Okay, next classification of carbohydrate is known as complex carbohydrates like oligosaccharides. Basically, oligosaccharides are the carbohydrates which consist of 3 to 10 monosaccharide units. Okay, and similarly, polysaccharides, when there are more than 10 monosaccharides linked together, they forms polysaccharides or they belong to the class polysaccharides. Okay, so remember this fact. Less than 10 units are known as oligosaccharides. More than 10 monosaccharide units, when they combine, they form polysaccharides. The examples of polysaccharides are glycogen, starches, and fibers. We will see each of them in detail in the later slides. Chitin, pectin, etc. Okay, so this I have already discussed that it is a simple carbohydrate, one that one attempted hydrolysis is not cleaved to smaller carbohydrate. Example, glucose. And we all know the formula of glucose, C6H12O6. And disaccharide upon hydrolysis gives two monosaccharides. Oligosaccharides, oligos means few. Okay, oligo is a Greek word, it means few. When we hydrolyze such oligosaccharides, they yield 3 to 10 monosaccharide unit. Okay, for example, raffinose. Hmm. So, if we want to if we want to classify monosaccharides, because they consist only one saccharide unit or one sugar unit and they are non-hydrolyzable. Okay. So, if we want to classify these monosaccharide, how we can do that? Okay. We can classify them on the basis of number of carbon atoms. Number of carbon atoms. Okay, like if there are like saccharides, Three number of they carbons. start with the 3 carbon unit. Okay, there is no known monosaccharides having 2 or 1 carbon. Okay, so basically monosaccharides or saccharides or carbohydrates starts with the 3 carbon trioses. Okay, Trios. trioses. We will see this. Okay, the number of carbon atoms present in their molecule and the type of carbonyl group they contain. The basic triose. Can anyone give example of triose sugar? Yes, ma'am. Can Ah, I, ma'am? okay, please. Ma'am, glyceraldehyde, dihydroxyacetone are the Uh, trio sugar. Correct. You are absolutely correct. Glyceraldehyde is a triose sugar, aldehydic form of triose sugar, and dihydroxy acetone is a ketone sugar. Okay, 3 carbon containing aldo and keto sugar. So this is the actually over 200 different types of monosaccharides are known. This is just basic general knowledge, and monosaccharides can be classified according to their number of carbon atom. And like I told you about triose, similarly, the monosaccharide which contains 4 carbon atom is known as tetrose. Okay, or we can also classify them on the basis of functional group. Like a monosaccharide which contain aldehyde group is known as aldose, and one which contain keto group is known as ketos. Like Manvendra has given a beautiful example of glyceraldehyde and dihydroxyacetone. Dihydroxyacid. They are the example of aldose and ketoses. So this is the basic structure. You can understand this from here. Like CHO is an aldehyde group, so it is known as aldose. The CH2OS, CHOH n times and CHO at the terminal end is aldose sugar. Here n can be 1, 2, 3, 4, 5 depending on the number of carbon atom. Atoms. If n is 1, then it will be glyceraldehyde. If n is equal to 1, then this is the structure of glyceraldehyde. If n is 2, then it will be the structure of, Dihydroxyacetone. okay, no. Dihydroxyacetone is an example of ketose. Okay, this is the ketose sugar. If Okay, aldehyde group. Okay, CH2OH, CO, CHOH, and CH2OH. It is an example of ketose. This is Yes, ma'am. if there is N is equal to 2, that means it is aldotetrose.
Okay, if N equal to uh, 3, then it is an example of ketopentose. Okay, because here the functional group is ketone. So ketopentose, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so remember in keto sugar, you have to put the ketone group CO, or in aldose sugar, there will be CHO group, aldehyde group. Okay, now coming to the most important part of the carbohydrates, actually people are always getting confused with D and L isoforms. Okay, they are stereoisomers. Basically, naturally occurring sugars, they belongs to D category. Like there is a glyceraldehyde, we always tell D-glyceraldehyde in context with the human being. Okay, like in living creature, D forms of sugars are prevalent as compared to L sugar. L sugar are lesser known sugar. Okay, although some bacteria have the L form of sugar also, bacteria and yeast, they have L sugars, but in human, D sugars are prevalent. What is this D and L? Okay, D and L form is known as enantiomer or stereoisomers. Basically, um, if you studied in your BS, when we pass a plane polarized light with a molecule, it has the capability to rotate that plane polarized light either towards the right side or towards the left side. Okay. Left. When a molecule rotate the plane polarized light towards the right side, it is known as dextrorotatory, or when it rotates it towards the left side, it is known as Levorotatory. the levorotatory, Laboratory. or we conventionally we designate it as minus sign, with minus sign. Okay, or dextro is designated by plus sign. So here you can see Plus sign. that this is the example of glyceraldehyde, plus that is dextrorotatory D-glyceraldehyde. Here you can see that OH group is towards right hand side. Okay, you can if you are seeing this in your front, you can see your right hand side OH group is facing towards your right hand side. Okay, but in levorotatory, the OH group is facing towards your left hand side. So you can remember this by your left or right too. Okay, so if this concept is clear to all, if you have any question, query, you can ask. Because this is a very strong concept, you should have a strong hold over this concept, because in many competitive exams they may ask, like in previous years net get SLET papers, if you read, you find that there are some questions over D and L forms of uh, sugars or amino acids. Okay, so moving to the next slide, a monosaccharide actually whose highest numbered stereocenters, that is the penultimate carbon, it is also known as the penultimate carbon, has the same configuration as D plus glyceraldehyde, is designated as a D sugar. And one whose highest numbered stereocenter has the same configuration as L-glyceraldehyde is designated as L sugar. Actually, I want to let you know one thing, that this glyceraldehyde has only three carbon, okay, and middle carbon has OH group facing towards right. So we said Right. it is dextro, okay. If there are more than 4 carbon, say in case of glucose, there are 6 carbon. Okay. So how this molecule will decide, or how one can decide it is dextro or levorotatory? Can you guess? How one can decide in case of glucose it is dextro or levorotatory? मैम कहना है Okay, okay, Manvendra. Okay. मैम एक्चुअली ये जो ग्लिसरील्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो कार्बन नंबर सेकंड है ये OH ग्रुप के साथ ये राइट साइड रोटेट करता है, इसलिए इसको प्लस साइन देते हैं और डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं मैम इसको. वो तो सही है, बट अगर मैं बोलूं इसकी जगह ग्लूकोज है 6 कार्बन,
ओके, और उसको हम डी और एल कैसे बोलेंगे? हालांकि आपको पता है डी ग्लूकोज इज कॉमन, पर उसको डी किस बेसिस पे बोल रहे हैं? क्योंकि उसके पास 6 कार्बन है और उसके पास लगभग 6 OH ग्रुप है। मेरा क्वेश्चन ये है, डिड यू अंडरस्टैंड मैंने क्या पूछा? यस मैम, समझ गए। ओके, वो मैंने अभी आपको रीड किया। ये यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक्चुअली नंबर ऑफ पेनल्टीमेट कार्बन का जो H और OH कॉन्फ़िगरेशन है, इट विल डिसाइड द ओवरऑल डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल, है ना? जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें नेक्स्ट स्लाइड में साफ लिखा है कि अगर आपका जो शुगर है उसमें जितने हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है उसके हिसाब से वो डी शुगर या एल शुगर कहलाएगी। अगर वो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसका जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड है इसलिए ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन अगर यहाँ पर हम ग्लूकोज की बात करें और डी ग्लूकोज की बात करें तो उसके मैक्सिमम जो बीच वाले मिडिल वाले कार्बन है उनके OH ग्रुप राइट साइड होंगे, तब वो डी शुगर कहलाएगी। और अगर मैक्सिमम लेफ्ट साइड होंगे तो वो एल ग्लूकोज कहलाएगा। क्लियर? यस मैम। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैम एक हाँ, पूछिए। हेलो, हम आगे चलें या हो गया है? किसी को कुछ पूछना है? Ma'am, can you repeat? मैं ये कह रही हूँ कि यस ये मैम, जो प्लीज एक आपके बार और जो, बता दीजिए। हाँ, ये जो आपके देखिए यहाँ पर क्या है भाई, ये तो ग्लिसरेल्डिहाइड है, 3 कार्बन शुगर है। ओके, अब Yes, 3 ma'am. कार्बन शुगर में अगर आप देखें पहला तो फंक्शनल ग्रुप हो गया CHO, है ना? दूसरा आपका Yes, ma'am. CH2OH एंड ग्रुप हो गया। जो मिडिल वाले जो कार्बन है उस पे HOH की रोटेशन से हम बोल रहे हैं कि ये डेक्स्ट्रो या लीवो रोटेटरी है ना? अब इसमें अगर आप देखें आपके राइट साइड पे OH ग्रुप है तो आप इसको क्या बोल रहे हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट? That's true. ओके, अब अगर मैं कह Hmm. रही हूँ कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए हैं, 6 कार्बन ग्लूकोज है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो डेक्स्ट्रो है या लीवो है ना? या मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगी? तो वहां पर ये जो HOH का जो कॉन्फ़िगरेशन है, मैक्सिमम नंबर OH ग्रुप इस तरफ होंगे, राइट साइड Hmm. होंगे, तो वो डी शुगर कहलाएगी, डी ग्लूकोज कहलाएगा। ठीक है, और अगर जो कि नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज है आपका, और अगर मैक्सिमम Hmm. नंबर ऑफ जो आपके OH ग्रुप हैं वो लेफ्ट साइड होंगे तो वो लीवो रोटेटरी हो जाएगा। Hmm. Okay, ma'am. Yes, ma'am. अभी क्लियर है? जैसे नीचे ये लीवो रोटेटरी का एग्जांपल दे रखा है, OH ग्रुप इस साइड है ना? लेकिन 3 Yes, कार्बन ma'am. के लिए देखकर कहना आसान है, पर 6 कार्बन के लिए कहने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ग्लूकोज में Hmm. ऐसा नहीं है। अभी हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी ये बात। एक्चुअली ग्लूकोज में एक कार्बन का HOH लेफ्ट साइड भी होता है ना? लेकिन रेस्ट 4 राइट साइड होने के कारण वो डी ग्लूकोज होता है। आप फिर से देखिए, मोनोसेकेराइड whose highest numbered stereo center penultimate carbon has the same configuration as D-glyceraldehyde is designated as D sugar, maximum number, not all. What is written here? Maximum number. Okay, like if it has 6 carbon, 4 are facing towards right side, 4 OH group are facing towards right side, so it is known as dextrorotatory. That's true. If 4 are rotated towards left side, then it is known as levorotatory. Lever rotatory. Okay, clear? Okay. Yes, ma'am. It's clear. D and L designation are not related to the optical rotation of the sugar to which they are applied, and one may encounter other sugar that are D or D double minus minus, and ones that are L positive or L minus minus. Just we will Negative. see this in detail in the next slide. Okay, this is the common structure of pyranose and furanase forms of your sugar. Yeah, you can see this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carbon glucose. Okay, CHO, CHOH, COHH, CHOH and CHOH. यहाँ पर अगर आप देखें 3 OH ग्रुप
राइट साइड को फेस कर रहे हैं, इसलिए इट इज अ डी शुगर, डी ग्लूकोज। यस मैम, डेक्स्ट्रो रोटेटर। ओके, और लेकिन यहाँ पर अब किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि एक लेफ्ट साइड भी तो है, तो क्योंकि एक लेफ्ट है, 3 राइट है, इसलिए फिर भी डी प्रीडोमिनेट करेगा यहाँ पर। ओके, हम Maximum number of हाँ atoms. मैक्सिमम नंबर कार्बन, पेनल्टीमेट कार्बन। हाँ. ओके, Hmm. यहाँ पर रिमेम्बर वन थिंग टू, कि ये 6 कार्बन जो है ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, लेकिन सॉल्यूशन में ये स्ट्रेट चेन में रह नहीं पाता है। Hmm. तो ये सॉल्यूशन में एक क्लोज्ड रिंग बना लेता है, जिसको 3 लोगों ने 2 लोगों ने कहे अलग अलग तरीके से बताया है। एक फिशर प्रोजेक्शन जो कि बहुत कॉमन है, दूसरा हावर्थ फॉर्मूलाज है, और तीसरा आपका एनोमेरिक फॉर्म्स होते हैं। ओके, तो मैं पहले फिशर प्रोजेक्शन की बात करूंगी। फिशर प्रोजेक्शन वो होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज बोट शेप्ड। तो यहाँ पर आपको ये बोट शेप दिख रहा है ना, राइट हैंड साइड आपका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्लूकोज का, वो बोट शेप। ये तीनों ही ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हैं। ओके, पहला जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, जो सेकंड है वो आपका पायरेनोस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है, और जो थर्ड है वो बोट शेप स्ट्रक्चर है, जिसको फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। इन सब में डिफरेंस क्या है? सिर्फ इंट्रामोलिक्यूलर अरेंजमेंट का डिफरेंस है, दैट्स इट। मैं आपको बोलूंगी कि आप ये दो तो जरूर याद रखें, फर्स्ट एंड सेकंड। लीनियर चेन आपको याद होना चाहिए। सेकंड आपको इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि अगर आप बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, है ना, और नहीं भी हैं, तो बायोकेमिस्ट्री आपका हर एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में भी आपको पूछ सकते हैं। और यहाँ पर मेन जो ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है, अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, उसमें अगर आप स्ट्रक्चरल बेसिस से ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल पढ़ना चाहते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। और ग्लूकोज तो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो मुझे लगता है यूनिवर्सल है, सबको उसके बारे में उसका स्ट्रक्चर एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, O CH2OH, यहाँ पर CHOH, HOH, CHOH, CH2OH यहाँ पर लगा हुआ है। तो आप ये देखें, ये जो फंक्शनल ग्रुप है O के बीच में है, ये यहाँ पर HOH का ओरिएंटेशन अपोजिट है। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी बात पायरेनोस टाइप, फिशर प्रोजेक्शन और लीनियर चेन की। एनोमर्स क्या होते हैं? ओके, कोई जानता है एनोमर्स क्या होते हैं? नो मैम। अल्फा और बीटा एनोमर्स। चलिए मैं बताती हूँ। चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ OH ग्रुप इन फर्स्ट कार्बन, ओके, इज नोन एज एनोमेरिज्म। ओके, तो यहाँ पर यहाँ पर दो तरह के ग्लूकोज भी होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज में आपका जो OH है वो ऊपर के साइड होता है, और बीटा डी ग्लूकोज में OH नीचे की साइड होता है। ये बात क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैं मैम। आपको यहाँ पर यस बहुत मैम। बेसिक कंसेप्ट्स बता रही हूँ, जो आप क्या करते हैं बुक्स में से, आपने बीएससी में पढ़ा होगा ये सब चीजें, लेकिन आप लोग पढ़ते हैं, Yes, ma'am. भूल जाते हैं, स्किप कर देते हैं। ओके, बट ये जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अब आप बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको जो बेसिक चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, किसी चीज को डिटेल में पढ़ने से ही उसके बारे में आपको सब चीजें पता होती हैं, और आप क्लियरली अगर आप फ्यूचर में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको पता चलेगा कौन सा कंपाउंड कैसे बिहेव कर रहा है और क्यों बिहेव कर रहा है। तो अल्फा और बीटा का कंसेप्ट आपने, एक होता है एनोमर्स, दूसरा होता है एपीमर्स। ओके, एनोमर्स एंड एपीमर्स, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, आई थिंक दे आर द एनोमर्स, एंड मैनोज एंड गैलेक्टोज दे आर द एपीमर्स। और एपीमर्स में भी यही डिफरेंस होता है कि आपका जो पोजीशन ऑफ H, ओके, देखिए 3 मिनट में आपका ये वाला जो मीटिंग है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो जी यस मैम। जस्ट
Just I am going to see the time. Okay. एक सेकेंड just तो आप लोग इस क्लास को रिज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम वी विल डिस्कस फ्यू मोर कॉन्सेप्ट्स आफ्टर 2 मिनट्स। आप फिर से नहीं, आफ्टर 2 मिनट्स हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और आप फिर से इस क्लास को रिज्वाइन कर लीजिएगा। ओके Okay, ma'am. Okay. यहाँ पर Thank you, ma'am. आप ओके अभी अभी हम इस चीज को यहाँ पर फिनिश करें। जस्ट एक सेकेंड। तो यहाँ पर हम एनोमल की बात कर रहे थे। सबसे पहले हम बात की थी हमने पिछले स्लाइड में, और अब हम स्टार्ट करते हैं फिशर प्रोजेक्शन। एक्चुअली बेसिकली फिशर प्रोजेक्शन दे आर यूज टू रिप्रेजेंट द कार्बोहाइड्रेट्स। और बेसिकली कब यूज करते हैं इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, जब वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में हो। ओके और यहाँ पर जो फिशर प्रोजेक्शंस हैं बेसिकली ये चिरल कार्बन्स, कई लोग इसको कायरल भी बोलते हैं, कायरल सेंटर्स भी बोलते हैं इसको, आपका अपना प्रोनाउंसिएशन है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके सो जो कायरल, कोई जानता है कायरल कार्बन्स क्या होते हैं या कायरल सेंटर्स क्या होते हैं? मैम हाँ बोलिए। ऐसा कार्बन जिसमें ऑल फोर फंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू different, all four sides are attached to different functional groups, that is chiral carbon. यू आर क्लोज टू द करेक्ट आंसर, लेकिन आपने बोला ऑल फोर नहीं। यहाँ पर क्या होता है, जो कायरल कार्बन होता है उसके जो चारों ग्रुप्स होते हैं दे आर डिफरेंट। ओके एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और जिस कार्बन पे ऑल द 4 ग्रुप्स दे आर डिफरेंट। ओके ऐसे ही कुछ आप कहने वाले थे या कह रहे थे? यही कहना था। हाँ यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, जो सेंटर में यहाँ पर सी लिखा नहीं है लेकिन आप अंडरस्टूड कर सकते हैं। ये जो सी है सेंटर में जहाँ एरो बना है, इस सी पे चारों जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। एक CHO है, एक OH है, एक CH2OH है और एक प्रोटॉन है। तो जब ये पोजीशन होती है तो उसको कहते हैं कायरल कार्बन या चिरल, जो जिसको भी जो बोलना है बोल सकता है। तो ये एल ग्लिसरल्डिहाइड है और ये डी ग्लिसरल्डिहाइड है। इन दोनों में डिफरेंस वही है, सेम। अगर आप देखें एल ग्लिसरल्डिहाइड में OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है और